Hello students, so today we will start a new chapter and the name of the chapter is phrases. So let's begin the chapter. Chapter 20 phrases. Phrase क्या होते हैं? A group of words without a finite verb doing the work of a noun, adjective or adverb in a sentence is called a phrase. वो group of words बिना किसी finite verb के जो एक noun का काम कर रहा है, adjective का कर रहा है, adverb का कर रहा है sentence के अंदर, उसे phrase कहते हैं. Phrase does not contain a finite verb but may contain an infinite verb. एक frame whatever the phrase के अंदर एक finite verb नहीं होता लेकिन infinite verb होता है, जैसे कि participle होता है, infinitive, gerund. A phrase in itself does not make complete senses but can have meaning only in the context of the sentences. Phrase का अपने आप में कोई complete sense नहीं होता है but उसका जो meanings होते हैं और sentence के according अलग हो जाते हैं. तो words in italics in the following sentence are phrases. He was a man of great courage. A stitch in time saves nine. He's coming at this very moment. She denies stealing the clothes. Adjective phrases क्या होते हैं? Phrase that does the work of an adjective modifies a noun or a noun, उसे हम adjective phrase कहते हैं जो adjective का काम करते हैं या फिर noun pronoun को modify करते हैं. जैसे कि lady in the back row was wearing a dress with the big blue ribbon. तो phrase in the back row वो हमें बताता है which lady, और since it modifies lady को modify कर रहा है, नाउन को कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया. तो फ्रेज विद अ बिग ब्लू रिबन वो डिस्क्राइब कर रहा है ड्रेस को, थिंग को. तो नाउन को कर रहा है, देयरफॉर वो भी एडजेक्टिव फ्रेज है. स्टडी द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव फ्रेज. अ गोल्डन क्राउन, अ क्राउन मेड ऑफ गोल्ड. मॉर्निंग पोस्ट वाज लेट तो एडजेक्टिव है, पोस्ट इन द मॉर्निंग वाज लेट एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. अ जंगल ट्रैक एडजेक्टिव हो गया, अ ट्रैक थ्रू द जंगल एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. अ ब्लू आइड गर्ल एडजेक्टिव हो गया, गर्ल विद ब्लू आइज एडजेक्टिव फ्रेज हो गया. Now you have to write the adjective exercise. Replace the adjective in color with the adjective phrase of the same meaning. अब इसमें हमारे पास है ब्लू ड्रेस, तो इसमें से आ सकता है लवली शेड ऑफ ब्लू. A wealthy man, a man of considerable wealth. Cowardly act, an act of utter spinelessness. Now replace the adjective phrases in color with adjectives. तो उसमें करना ही वोर अ टर्बन मेड ऑफ सिल्क, तो इसमें हम लिख देंगे ही वोर अ टर्बन that had soft and silky feet. तो ये बन जाएगा you have done a deed dead of shame. So you have done a shameful deed. तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है. Now comes adverb phrases. A phrase that modifies a verb, adjective or an adverb, उसको adverb phrase कहते हैं. जैसे कि adverb phrase में answer the question when, where, why, how and to what extent. Study the following sentence. She welcomed the guest warmly. तो how आ गया. She welcomed the guest in a warm way. How adverb phrase आ गया. The box fell here. जगह आ गई where. Box fell on this spot. Where adverb phrase. They are happy now. When. They are happy at this moment. When. ये भी adverb phrase. Now let's see exercise. Now you have to replace the adverb को adverb phrase से replace करना है. I will sit quietly. तो I will sit in complete silence. The pigeon flies swiftly. The pigeon flies with great speed. तो इस तरीके से बनाना. Now replace the adverb phrase in color with adverbs. He is ignorant to a proverb, तो he is proverbially ignorant. I thank you with all my heart. I thank you sincerely. तो ऐसे ही आपको इनको रिप्लेस करना है. Now comes to the next is noun phrases. A phrase that does no work of a noun उसको noun phrase कहते हैं. Like look at the sentence. To win the top position in my dream,
Our boss loves to issue hard commands. Early to bed is a good maxim. So in these sentence में जो word color है noun phrases है जिनको हम subjects और objects की तरह use करते हैं verb. Usually जो noun phrases होते हैं वो question का answer देते हैं what. Now let's do the exercise. You have to pick out the noun phrases in the following sentence. I wish to speak to the principal. So wished to speak. He loves to talk. Loves to talk. He intend to work. He dislikes having to go there. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through this again and complete the exercises. We will meet in the next video. Bye bye. Take care. Thank you.